some sensational personality with the country and the son of the soil who has ownership of my India. That is what, and he feels it, everything is his own. He takes the pride to have the ownership, my India, right? And this is, without much introduction, you have already known, he is a popular personality in the country and having sensation everywhere. When the country comes, when India comes, when Hindustan comes, that's no much introduction is required. He is the great personality, the ambassador, Dr. Deepak VOHRA. He has been in the series of lecture on the Foundation Day of the Vikash group of institutions. May I have the pleasure, please welcome Dr. Deepak VOHRA to the stage. And may I request the chairman of Vikash group of institutions to accompany sir to the dais. Thank you, sir. Let them just stop the slideshow. I say, please, there are too many of you standing near the laptop. Would only one person stand there? There's an English expression, बहुत खनसामा होते हैं तो खाना खराब हो जाता है. One person. Thank you. अरे ताली बजाओ यार, क्या कर रहे हो? Thank you, sir. Please, sir. Thank you very much. Thank you. This is for me. Please clap loudly. Thank you. And we have to light something? Oh. So now please, may I request please have the lighting of the lamp, please. Thank you, madam. Mr. Suri Sethi, please come up. Hello. Sir, may I request Jawahar sir, please. And may I request Dean sir and Panda sir, please. May I request Narayan sir, please. शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति Finished? Yes. This is, and I'm very grateful, Mr. Chairman. You've given me a representation of my best friend. He lives in a place called Puri. I call him Jaggi. You call him Jagannath. So I have received this. But we can't let you go like this. I request Mrs. Murali to please come. Where is she? Mrs. Murali? Is she here? Let me tell you about this. Yes.
Madam, we have a World Buddhist Center in Delhi. I'm the president. So with blessings from His Holiness the Dalai Lama, I'm privileged to give this. Mr. Chairman, don't go away. Mr. Chairman, His Holiness Dalai Lama did not forget about you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. नहीं, आप बेटी हैं देश की. I can't see the managing director and I can't see the executive director. Are there wives here? Who's here? Executive director is here. Sir, from the Golden Temple in Amritsar. Okay, the other, who's not here? The managing director? He's gone away. Tell him he's not getting his gift. All right, we start. Thank you. Thank you, sir. Thank you. If you'll take your seats. Dr. Suri Sethi, you will be helping with the presentation. You will be helping me with the presentation. Thank you. I'm also coming down. Oh, I have to put this away. Thank you. Mr. Chairman, sir, may I start? Mr. Executive Director, sir, Madam, members of the faculty, senior officials of one of the finest educational institutions in the world, called the Vikash Group. The pride of India, the pride of Asia, these young kids who are sitting in front of me. Good evening! Sir, you have to be looking at me, not at the girls, if you're running the thing, right? My name is DEEPAK VOHRA. I work for the government. I'm an ambassador of India and special advisor to Prime Minister in 3 African countries. For the next 25 minutes, please don't look at Twitter, not Twitter. What is that called? Twitter. Yes, thank you. And please don't look at Facebook, not Facebook. Facebook. Because just before coming here, you know, there's a country that is always fighting with us. There is some badmash who says, my name is Sharif. I forget who it is. So we told him not to fight with us. 25 minutes. Are you ready? Yeah. So it's a great honor. You know, we all live within our realities. हम सब की अपनी सच्चाई होती है. हम सब अपनी सच्चाई जानते हैं. आप पढ़ नहीं पा रहे, मेरी 2 सच्चाइयां हैं. और मेरी 2 सच्चाइयां क्या हैं? One, that I'm 72 years young. And my second सच्चाई, that I'm still very handsome. इसीलिए जब ब्यूटीफुल मैडम लोग आती हैं तो मैं क्या कहता हूं? बचना ए हसीनो तो मैं आ गया. Next one, sir. Please go there and do it. Yeah, go back, sir. Go back. Thank you.
When the Second World War khatam hua tha 1945 mein, we created a new system in the world. And that system was ruled by the West. There was the, sir, ye Chinese equipment hai, tabhi city bajata hai. So there was the United States on one side and the Soviet Union. You remember the Soviet Union? That was the old world order. But the Soviet Union broke 32 years ago, टूट गया. तो पुराने ऑर्डर का काम ही खत्म हो गया. But नया ऑर्डर which will rise in the east, the old order was from the west, उसको कोई उठने नहीं दे रहा. That old order is stuck in the womb of the mother. We are trying very hard. Now, when I was in school, I learned there used to be BC, the time zone before Christ. You remember that? Before the Christian era. Then there was AD. अभी तीन है. BC before COVID, DC during COVID, and AC after COVID. And we are right now in DC, which is during COVID. So you're going too fast, sir. You're going too fast, sir. Please pay attention, sir. I'll give you money, sir. Now stay right there, sir. Don't fiddle with that, sir. Thank you, sir. Now my question to all the young people here is, I want you to answer this question. Dr. Suri Sethi, Jawahar Suri Sethi, one of the finest sons of India and an outstanding human being and a global specialist. He tells me that one rich country is the United States. Do you agree, sir? Another one is France. Then there's Germany, Japan, Australia. Now my question for the kids, who developed these countries? First option, people came from the moon. Is that correct? People came from Mars. सही है? अच्छा फिर समुंदर से निकल के आए थे. तो उनके अपने लोग थे. अब मेरे सवाल का जवाब मत देना. मिस्टर चेयरमैन, अगर उनके अपने लोग थे तो हमें क्या तकलीफ है? जवाब मत देना. हम किसी से कम हैं? आप लोग किसी से कम हैं? तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते जो उन लोगों ने किया है? किसी भी देश में, and I've served in 13 countries, 6 countries as your ambassador. What is this, sir? Yes, sir? Oh, this is people coming from the moon. इसको लात मारूं फिर ठीक हो जाएगा. अभी ठीक हो गया. Now, in the countries where I've served, 13, 6 as ambassador, you need, और चुप कर जा यार, thank you. अभी जापानीज में बोलना शुरू कर दिया इसने, पहले तो चाइनीज में था. Looks like it. He's behaving like Pakistan. So, there are 3 things that are required, beta, sons and daughters of India. 3 things required for development. The first is self-confidence. पहली चीज क्या होती है? दूसरा होता है self-esteem. वो क्या होता है? और थर्ड होता है self-reliance, यानी आत्मनिर्भरता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, I think I can't walk, yeah. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बात करता है आत्मनिर्भर भारत की. वो आपसे बात करता है मन की बात. मैं आपसे बात कर रहा हूं दिल की बात. हम लोग वहां पहुंच चुके हैं. सर आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं सर, आप मैडम की तरफ देख रहे हैं. 1 साल अभी बचा है इलेक्शंस के लिए. कितना टाइम बचा है? लेकिन कहानी शुरू हो गई है. वो एक मैडम ब्रिटिश न्यूज एजेंसी है,
We call it the bullshit and bluster corporation. Sorry, BBC. वो भी गाली देते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी गाली देता है, ऑक्सफैम भी गाली देता है। नरेंद्र मोदी को गाली क्यों देते हैं? क्योंकि ये डरते हैं अब भारत की ताकत से। गोरे की ताकत खत्म हो गई, खत्म हो गया, इज्जत खत्म हो गई, अक्कड़ नहीं खत्म हुई अभी, और वो हम खत्म करेंगे बहुत जल्दी, आप देखेंगे। मैंने कम से कम 40 बार इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को होता है ना सर इंडिपेंडेंस डे, तो मैंने लाल किले से 40 बार कमेंट्री किया है। प्राइम मिनिस्टर आते हैं, बोलते हैं ये करना है, वो करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, शाम को चाय पी के सब भूल जाते हैं। फिर एक गुजरात का चाय वाला आता है, और वो चाय वाला पिछले साल कहता है, Will you make India a developed country by 2047? हमें एक टारगेट देता है, और हम उससे कहते हैं सर हमारा टारगेट 2047 है, हम 2047 से पहले कर देंगे। जोर से ताली बजाओ। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम पागल हो गए, हमें भूत सवार हो गया है। मैं आज सुबह आया हूं फ्रॉम रायपुर टू बारगढ़। इतनी खूबसूरत सड़कें मैंने यूरोप में भी नहीं देखी, अमेरिका में तो है ही नहीं। मेरे जो दोस्त आते हैं कहते हैं कि हम आंख बंद करते हैं, आंख खोलते हैं तो आपने एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी होती है। We've gone mad। कौन सा देश मुझे बताओ 45 मिनट 45 मिनट्स में 1 किलोमीटर सड़क बनाता है? कौन सा देश है? क्या नाम है उस देश का? भारत है, इंडिया। कौन सा देश है वो 29 अप्रैल 2023 को 62 नए एयरपोर्ट बना रहा है एट द सेम टाइम? कौन सी कंट्री है? कौन सी कंट्री है जो 22 सी पोर्ट्स बना रही है टुडे? कौन सी कंट्री है? Now if we can do all this, आप समझ जाइए कि हमारी ताकत क्या। और फिर 470 एयरक्राफ्ट आपको पता है एयर इंडिया ने ऑर्डर किए हैं, और वो एक कंट्री है सर, वहां के प्रेसिडेंट बड़े बुढ़े हैं, मिस्टर बुड्ढन नहीं, क्या नाम है उसका? बाइडन, यस सॉरी, बुड्ढन नहीं, बाइडन। तो वो नरेंद्र मोदी को फोन करके कहता है, बेटा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू हैव क्रिएटेड 1 मिलियन जॉब्स इन अमेरिका। यानी इंडिया इज क्रिएटिंग जॉब्स इन अमेरिका। दुनिया बदल रही है, दुनिया पागल हो गई है। और फिर एक वो है ब्रिटेन का प्राइम साधु संत, क्या नाम है उसका सर? नहीं, साधु फर्स्ट नेम क्या है? ऋषि, साधु संत नहीं, ऋषि। तो वो ऋषि मुनि कहते हैं पीएम को फोन करके, सर थैंक यू फॉर हेल्पिंग द ब्रिटिश इकोनॉमी। हमको कहना चाहिए था जो हमसे लूटा है ना कोहिनूर, वापस लाओ, करेंगे। और फिर वो फ्रांस का मैकरोनी नहीं, जो भी उसका नाम है, मैक्रोन, वो भी फोन करके कहता है बल्ले बल्ले बल्ले। ऑल दीज चैप्स आर नाउ प्रेजिंग इंडिया। अब सुनिए, मैकेंजी एंड कंपनी का नाम सुना है आपने? मैकेंजी एंड कंपनी का जो सीईओ कहता है, दिस इज नॉट इंडियाज डेकेड, दिस इज इंडियाज सेंचुरी। विराट कोहली की तरह सेंचुरी है ये। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, कितने सर? 12 जीरो इन 1 ट्रिलियन। मैं डॉलर में आपको बताऊंगा। वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। सो द फर्स्ट $1 trillion इन आवर इकोनॉमी हमें 60 साल लगे, 60 years। कितने years सर? The second trillion took us 10 years. The third trillion took us 5 years. We've already crossed 4 trillion. We'll announce it in August. PM will announce it. The 4th trillion took us 2.5 years. नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा था कि मैं 2025 तक को
2025 तक आपको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी दे दूंगा। कहा था ना सर, वो 5 ट्रिलियन हम आपको 2025 से पहले दे देंगे। पूरा भारत वंदे भारत एक्सप्रेस बन चुका है। The speed at which we are moving. अच्छा, अब एक चीज आपको बताता हूँ। हाँ, बड़ा मजेदार है। Per capita income today, per capita income का मतलब समझते हैं? औसत average in India it is $2,200 per head per capita per year. कितना है सर? 2,200. 2,000, that's about 2 lakhs of rupees. By 2047, it would have increased 10 times to $20,000 per capita. और बेटा एक चीज याद रखना, उस समय अंग्रेज हमसे आके कहेगा, भाई मेरे को नौकरी दे दे अपने देश में, मैं आना चाहता हूं। ये जो 27 का टारगेट है बेटा, हमारे बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया। बेटा मेरे लिए, मैं तो बुढ़ा हूं, 72 इयर्स यंग, हैंडसम यंग, यस। मेरे लिए तो ये एक विजन है। I won't be alive, but for you, it's a mission. Mr. Chairman, in your school, when I went into the building, I was very impressed. You have a vision and you have a mission. Fantastic. So for me, it's a vision, and for my children, it's a mission. This is non-stop India. Next slide, sir. Since independence, 75 years, $1 trillion has 12 zeros. $1 trillion has come to India as foreign investment. Half has come in the last 7 years. 160 countries, sir, 63 sectors, they have invested money in India. Because I'm an economist. जो पैसा है ना सर, आप तो बिजनेस करते हैं सर, पैसा बड़ा डरपोक होता है। जहाँ पे सेफ्टी नहीं है वहाँ नहीं जाएगा। सही कह रहा हूँ सर? और दूसरा, वो बड़ा भूखा होता है, वो मोटा होना चाहता है, कितना खाऊं, कितना बढ़ूं। And why are people coming to India? Because we give them safety for their money and the ability to grow. That is why पूरी दुनिया आज भारत में इन्वेस्ट कर रही है। अब यूनाइटेड किंगडम का नाम सुना है, ग्रेट ब्रिटेन का? मैडम, नंबर 1 disease is loneliness. They even have a minister for loneliness. Even Japan has a minister for. British people say हमारे पास 1 करोड़ lonely people, 1 करोड़, 10 million, और many of them are rich old women. So they are training young people to be companions. कुछ ध्यान रखो, बातचीत करो। अरे मैंने भी फोटो भेज दी अपनी, अमीर औरतें हैं, सब मुझे जवाब दिया उन्होंने, हम लोनली तो हैं पर इतने लोनली नहीं है, बड़े कमीने लोग हैं सर। और फिर हम लोग अपने बच्चों को समझते नहीं हैं। All of you parents who have children, we don't read them. Deloitte कंपनी का नाम सुना है? They did a survey. Every year they do a attitude survey of millennials and post-millennials, those born between 1985 and 2003. और latest survey उनका 2022 का कहता है, and you my children, it says, you want a big house, you want a car, you want a good salary, a good job, a good marriage, but more than anything else, the children of India want to give back to India. That is you, not me. And it says you will write India's development story. अब आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। 2021 जब वायरस, चाइनीज वायरस ने हम पे हमला किया था, याद है आपको सर? जिसको आप लोग कोविड कहते हैं, रबिश, नो कोविड, इट्स चाइनीज वायरस। हमको मालूम नहीं था, डॉक्टर सूरी सेठी, we did not know, Murli sir, how to deal with it. हम गिर पड़े, दुनिया हम पे हंसते थे कि बड़ा IT सुपर पावर है, because we didn't know what had hit us. आज बहुत से लोग मुझे आके कहते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो मैं कहता हूँ टाइगर,
उस वक्त मुंह पे ताला लगा हुआ था. When we were suffering, why didn't you come and tell us what was happening? Prime Minister was fighting elections in Bengal. हार गया, अलग बात है. He came back, he took control. We recovered very fast. Because at that point of time, we did not have a single manufacturer of PPE, personal protective equipment. And I congratulate you, sir. Your hospital was dedicated to COVID. You are a brave son of India. Ma'am, you had COVID. Your children had COVID. Ye haar nahi mana. Sir. So, Prime Minister said we should have PPE manufacturers in India. Sir, we didn't have a single one. And in 3 months, I had 600 companies making PPE in India and exporting to other countries. And 70% of these 600 were in Gujarat. Happy birthday. There's an English expression. Hey, you heard this? When the going gets tough, the tough get going. When the going gets tough, the tough get going. When the going gets toughest, the Indians get going. Every day we do 41 crore digital transactions. How many, sir? 41 crore every day. Because I have 170 crore mobile phones in my country and 110 crore are smartphones. And I have this wonderful story traveling in Rajasthan. And this lady, a gypsy woman, stops me, she has a child. And she says, taps on the car window, kuch paise de do. And honestly, I don't carry money because I use my mobile for everything. So I said, bye. Paise nahi hai. She's begging. You know what she tells me? Sir, Paytm se de do. 3 Indians join the internet every second. And 2 of them are from the villages. Arey kaun kehta hai hum gaon ka dhyan nahi rakh rahe. Look at the way they are racing ahead. There's a Nobel laureate, he's my friend, Michael Spence. He says India is the outstanding performer now. Beta, let me tell you children about India's jam trinity. Jam khate ho ki nahi? Jam khate ho na kabhi kabhi toast ke saath? Hamara jam kya hai? J is Jan Dhan. When we started zero bank account system, the banks took us to court. They said, how can we make money? If there's no money in your account, the bank has to spend money to maintain it. They went to court, they lost. We have 45 crore bank accounts today. The A stands for Aadhaar. When we did the Aadhaar, sir, kitne log bole ki hamari privacy pe hamla ho raha hai. Hum nahi denge. They went to court. Wo bhi haar gaye. The M stands for mobile. वहां पे बोले जी यहाँ तो 1G, 2G, 3G, 4G, 10G स्कैम होते हैं, मोबाइल नहीं चाहिए. They also went to court. वो भी हार गए. So India's jam is Jan Dhan, Aadhaar and mobile. And today, madam, 66 countries, including the United States, want to learn from us how to operate the jam system. जोर से ताली बजाओ यार, क्या करते हो? Have you heard of a fellow called Chanakya? Yes. Chanakya said when the right action is not taken at the right time, time will ensure that the action is not successful. I studied at Sorbonne University in Paris, and there we read about Victor Hugo, the French intellectual, who said, no power on earth can stop an idea whose time has come. Now, our time has come. This book is written by an American diplomat. She's a friend of mine. She's a friend, not a girlfriend, okay? She's written this book called Our Time Has Come. Hamara samay aa gaya hai. How India is making its place in the world. And do you know where this book sells the most?
in Pakistan. Next slide, sir. Thank you. By the way, she's a good diplomat. And she once asked me, she said, I've heard something about your connection with Bollywood. She asked me. I said, yes. In 1972, I acted in 2 Bollywood films. Tali bajao. And you know something, madam? Both those films were super flops. Chanakya also said कि self-interest के बिना कोई दोस्ती नहीं होती. I'm sure all you kids have best friends. Do you? You all have best friends? You have a best friend because you trust that person. That person helps you. You share secrets. You give gali to mummy and daddy with your best friend, right? Good. So what is the self-interest of India and the world? Sons and daughters of India, in the next 10 years, 5 years, 2 years, only 5 issues will dominate my attention. The first is your health. Mr. Chairman, perhaps in 20 years from now, somebody will write, when the virus was unleashed on the world, you and I, humankind, we came close to extinction. We didn't know how to fight it. 1 out of 3 people on our planet got the virus. Most without knowing it. Nobody told us the truth about the virus. China lied and people died. Millions died. The second is climate stability. The third is economic recovery, for which you need free and open seats. The fourth is new technologies that are coming every day. And the fifth is terrorism. चाइना ने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा मैडम 200 देशों को. 200 कितनों को? और उसके ऊपर लिखा हुआ था वायरस. हमने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा 200 देशों पे, लिखा था वैक्सीन. (2021) sons and daughters of India, we did not have enough vaccines. We were struggling. But we sent 7 crore vaccines to 100 countries. You know, मेरे अंकल हैं वो लोग, मेरे cousins हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताए हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे दामाद हैं. क्यों भेजा हमने? क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते. अमेरिका का एक प्रेसिडेंट होता था मैकडोनल्ड ट्रंप. मैकडोनल्ड ट्रंप नहीं, क्या नाम था? मैं बुढ़ा हो गया सर. क्या नाम था उसका? डोनाल्ड ट्रंप था. मैकडोनल्ड नहीं, डोनाल्ड. हाँ हाँ. उसको भी हमने दवाइयां भेजी और क्या लिखता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी, वी विल नेवर फॉरगेट इंडियाज काइंडनेस. यू हैव बीन ग्रेट. ये अमेरिकी बोलता. मैं दुबई में था. टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा. भारत के तिरंगे में रंगा हुआ और मैसेज क्या आ रहा था? स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, वी लव यू इंडिया. $248 करोड़ वैक्सीनेशन, 248 crores in 21 months. कौन सा देश करता है सर? इंडिया करता है. नाक से दी जाने वाली पहली वैक्सीन कौन डेवलप करता है? दुनिया कहती है हमें 500 करोड़ वैक्सीन और चाहिए 1 साल के अंदर. कौन बनाएगा? कौन से देश का प्रधानमंत्री जाके बैठता है 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के दफ्तर में? वो लोग कहते हैं हमें 3 साल लगेंगे वैक्सीन के लिए. He says नहीं. They said 2 साल. He said नहीं. They said 1 साल. He said नहीं. They agreed on 6 months. ये कौन से देश का प्रधानमंत्री जाके बैठता है उनके साथ और बोलता है बनाओ? कौन सा देश? Do you understand his commitment? And the people of India, their commitment? Climate change. In the last 30 years, climate disasters have increased by 3 times. How many times, sir? 3 times.
यूरोप हैज द वर्स्ट ड्राउट. पानी नहीं है, बारिश नहीं हुई 500 साल में. उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि आप 2 हफ्ते में एक बाहर नहाओ. One time have a bath in 2 weeks. मैं तो नहीं जाता, बुआ थी उन लोगों से. You know why we have all this? The earth is protesting. One country which has never damaged our planet. Do you know which country that is? अरे हम तो धरती माँ कहते हैं कि नहीं? गंगा को क्या बोलते हैं? माँ. हम तो पहाड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, चिड़िया की पूजा करते हैं. ये भारत है. क्या हम नुकसान कर सकते हैं अपनी माँ का? धरती माँ का नुकसान हम नहीं करेंगे. आपने नाम सुना होगा ये मेलन क्या नाम, भूल जाता हूँ सर नाम क्या है इसका. मेलन जो ये टेस्ला गाड़ी बनाता है, एलॉन. हाँ एलॉन जो भी है, मेलन नहीं है, एलॉन है. हाँ वही. वो कहता है इंडिया हैज द मोस्ट इको फ्रेंडली सिविलाइजेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री. मैंने नहीं कहा, ये टेलन मेलन जो भी उसका नाम है, ये उसने कहा. थर्ड थिंग इज, अरे बच्चों, जब 500 साल पहले अंग्रेज राज करने आए थे एशिया पर, अफ्रीका पर, लैटिन अमेरिका, 500 साल पहले हवाई जहाज से आए थे? हवाई जहाज तो थे ही. मोटर कार से आए थे? मोटर कार भी नहीं. ट्रेन से आए थे? तो फिर कैसे आए थे? बड़े होशियार हो गए, कह रहे समुंदर से आए थे. शाबाश. तो अगर हमको रिकवरी करनी है तो आई नीड फ्री एंड ओपन सीज. ट्रू. और फिर वो डिंगलिंग टिंगलिंग पिंग पोंग डिंग डोंग जो भी उसका नाम है, जो वो चीन का लीडर है, पिंग पिंग जिंग जिंग जो भी उसका नाम है, वो क्या बोलता है कि भाई द इंडियन ओशन इज माइन. आई सेड हाउ कम? ही सेड मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा वहां डूब गए थे तो मेरा है. अगर टाइगर, यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया. वैसे टाइगर मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा बीजिंग में मर गए थे तो चाइना तो मेरा है. वो बेवकूफ ये बात है, समझ नहीं पाता. But he will not come into the Indian Ocean, beta. India has the second most powerful navy in the world. अगर वो आया, डुबा देंगे उसको. Based on military strength today, the most powerful military, they spend the most money, is the United States. अफगानिस्तान में पिटाई होके बाहर आ जाते हैं, but they are still the most powerful. Number 2 is Russia, Ukraine में पिटाई हो रही है. Number 3, not my figures, international figures. Most powerful military in the world is India. The third, more than China. Then what is bothering me is the rise of terrorism. Why should I be spending my time dealing with terrorism? So I have many other issues. I have development, I have peace, I have prosperity. But terrorism is taking up a lot of my time. 27 years ago, we told that racket, sir, वो जो न्यूयॉर्क में एक होती थी ना संस्था, क्या नाम है उसका? यूनाइटेड नेशंस. अभी जिंदा है कि मर गई? मर रहे हैं. अच्छा. यूनाइटेड नेशंस से 27 years ago हमने कहा भाई एक अग्रीमेंट करो ऑन टेररिज्म. सारे एम्बेसडर्स मेरी तरह बड़े भाषण देते हैं, फिर शाम को स्कॉच विस्की पी के सब भूल जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं करता. एंड देन वी हैव हाइपर टेक्नोलॉजी. You call it engineered intelligence, artificial intelligence. I call it engineered intelligence. Sir, मेरी बेटी अमेरिका में रहती है. So 2 years ago she told me, she says, Dad, आप बुढ़े हो गए हो. बुढ़ा तेरा बाप हो गया. मैं कहाँ से बुढ़ा? So she says, I'm going to send you a mobile phone made by this fruit company. ये fruit company का नाम क्या है? Apple. देखो भूल जाता हूँ सर. और बोली कि उसके अंदर एक बड़ी होशियार मैडम रहती है. क्या नाम है उसका? सिरी. थैंक यू सर, आई रियली फॉरगेट. तो मुझे कहती है इफ यू फॉरगेट वेयर यू आर तो सिरी से पूछ लेना. तो अभी मैं ट्राई करने लगा. आजकल सिरी मुझसे एंग्री है, वो बोलती नहीं है, लिख के देती है मेरे को मैसेज. तो मैडम मैं जरा पढ़ दूं? अभी पूछ लेता हूँ. जस्ट गिव मी 30 seconds. Hey Siri, where am I now? You're in Bargarh, Odisha, India. Is that true, sir? वो ये CIA की एजेंट है, ये बड़ी होशियार औरत है. अच्छा अभी पकड़ता हूँ. Hey Siri, what is my wife's name? पूछ रही है which wife?
46 years, I have one wife, ma'am. Please don't use these fruit company telephones. They are terrible. Don't ever use them. My capital in India is my human capital. That is my biggest strength. And countries like have kids like you, we will lead. Are, have you heard of Billu Bhai Gates? अपना पंजाब का दोस्त सुना ना सर आपने बिल्लू भाई? हाँ, गेट्स वो क्या बनाता है? विंडोज, राइट? हाँ, वो कहता है if you want to study one country now, go to India, because the most innovation, he says, is taking place in India. अब मैंने उससे एक सवाल पूछना था, नहीं पूछा. वो सवाल ये है कि टाइगर, नाम तेरा गेट्स है, बनाता विंडोज है. ये कहानी बता मेरे को पहले क्या. What is mankind's most valuable possession? ये यक्ष एक सवाल पूछता है धर्मपुत्र से महाभारत में. जब धर्मपुत्र के 4 भाई मूर्छित होकर गिर जाते हैं, पानी पीते हैं तालाब से, तो यही पूछता है यक्ष कि तेरे भाई फिर उठ जाएंगे, जवाब दे. और धर्मपुत्र पता है क्या कहता है? एजुकेशन, नॉलेज, साक्षरता. 10,000 years ago, Mr. Chairman, your country and mine was talking of education. जब ये गोरे हु करके जंगलों में घूमते थे, we were talking of education. When I was manufactured in India, we had 500 colleges and universities. How many, sir? 500. Today I have 50,000 colleges and universities. And you probably heard the name of one of the best. It's called the Vikash group. नाम सुना है सर आपने उसका? Out of those 50,000, I have 15 lakh schools. How many? अमेरिका की आबादी, सर, मैडम, दिस इज ऑफ इंटरेस्ट यू. अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की है, 33 करोड़, और मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं. I have 34 crore students. And you know something? 52% of those students are our daughters. अबे डूब मरो लड़को. Our girls are doing so much better. लंदन की छोरी नाना, पारिस की पोरी नाना, इंडिया. Aha. 1 out of 3 Japanese, next one, sir. 1 out of 3. Hey, don't fool around, he'll do it. 1 out of 3 Japanese is above 60 years. 1 out of 4 Europeans is above 60 years. 1 out of 6 Chinese is above 60 years. And 1 out of 12 Indians is above 60 years. My teacher at the Sorbonne in Paris, Alfred Sauvy, said, Europe will soon be an old continent, old people, old homes, old ideas. And the Pope calls it an elderly and haggard continent. Let me show you some very interesting figure. Next one, sir. And this is fantastic. Next slide, please. Thank you. Median age. Median age means, sir, आधी जनसंख्या उससे ज़्यादा, आधी उस. Not average, median. Median age of India is 29. How much, madam? 29, which means half of all Indians, like those children there and me, we are less than 29. And half, like these fellows here, is a little more than 29. The oldest country in the world is Japan. उनकी median age है 49. कितनी है सर? पता है क्यों? वो बच्चे पैदा करने भूल गए. अरे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम सिखा देंगे उनको. क्या बात है. Last year, madam, Japanese mothers produced 8 lakh children. How many, madam? पूरे देश में 8 लाख बच्चे पैदा किए last year. अरे उससे ज्यादा तो हम बारगढ़ में ही पैदा कर देते हैं. क्या बात है. But it was not always like this. You know, sons and daughters of India, the 50s, 60s, 70s, 80s was a very bad time for us. We lost, those were the 5 lost decades of India. 1965, we fought a war. 1966, the rains didn't come. Your mother, India, she was cracked and gaping from the north to the south. There was no water. Our agriculture was finished. We were on the verge of starvation. Mrs. Gandhi went to America and asked for wheat. And the Americans said,
the Indian leader has come begging. You don't say things like that. She came back and she told her officers, India will never beg for food again. We had imported 9 and 11 million tons of wheat, largest imports in human history. Sons and daughters of India, जिस देश ने ऐसे हाथ फैलाए थे, आज वो दुनिया का second largest producer of food grains. Your country. अरे जोर से ताली बजाओ. And we were told, sir, madam, we were told not to eat on Mondays to save wheat. बेटा, 52 मंडे होते हैं एक साल में, 52. मैं भूखा सोया एक साल, 52 दिन मैं भूखा सोया. माँ तो माँ होती है, मुझे कहती थी दीपक खा ले. My father told her, इसको मत बोल, ये पागल है देश के, ये And from 2003, we don't take any help from anybody. We help countries, 150 countries. Sir, जब tsunami हुई थी, याद है sir, 2004? We were the first to go to Sri Lanka, we went to Indonesia, we went to Malaysia, we went to Myanmar, Bangladesh. जब हम पहुंच गए ना, तो हमारे दोस्त अमेरिकन कहते हैं, we will work with our Indian partners. अबे टाइगर तेरे को किसने बुलाया? तो वो भी पहुंच गए यहाँ पर. And then we gave drinking water to the Maldives. We had this massive earthquake in Nepal. Do you remember? 2015. Our relief efforts began in 15 minutes. And our first plane landed there in 4 hours. And this year in Turkey, where the president is that turbofan fellow, whatever his name, turbofan, something like that. He keeps abusing India. We were the first country to reach with help. 5,000 Turkish people came to the airport to cry when we were leaving. Prime Minister just told us, उसने जो गाली देनी है देने दो. आपकी दुश्मनी क्या है with the people of Turkey? What a beautiful sentiment. We helped them. You know, our total private wealth in India, sir, and I'll take another 5 minutes, is $8.2 trillion. Trillion has 12 zeros. The private wealth, this is what mummy and daddy keep in the locker and don't give tax on. So I have to send the income tax fellows to your house. $8.2 trillion is our private wealth. Sir, madam, do you know what is the number one we spend it on? On beauty parlors. Madam, कभी-कभी तो जाती है ना beauty parlor में. I have 650,000 towns and villages. How many, sir? 6.5 lakh towns and villages, और मेरे पास 1.5 crore beauty parlor है. That is the strength of India. Kargil की लड़ाई लगी थी 1999 में. This Bihari boy went to register for the army. They told him, you can't, तेरी दोनों टांगें कटी हुई हैं below the knees. And what did he say? He said, gentlemen, I have come to fight the enemy. I've not come to run away from the enemy. Us, look at the strength of this country. This is a picture I took myself in Sikkim. Listen to this story. Listen very carefully. 2011 September. There's a road that goes from Siliguri, sir, in West Bengal to Gangtok, the capital of Sikkim. Because of the intensity of the earthquake, it was broken in 300 places. How many places, sir? 300. The road was broken. How long can you feed your people through helicopters? Sikkim is a beautiful part of India. So the then Prime Minister, sir, don't worry about it, that funny country is not going to attack us. Don't worry about your mobile, sir. Sir, don't worry, they won't attack us, I promise you. And so, the Prime Minister said, which country has the best road technology in the world? Mountain roads. Austria does. They're completely mountainous country. So we asked them. They said 3 months to mobilize the equipment, madam. 3 months for the repair. And millions of dollars will be there. Now who's going to wait for 6 months? They are my people. Have you heard of the border roads, sir? Yes. Border roads? Prime Minister asked
Let's speak to border roads. I made that call as I stand before you because I was in Sikkim. I spoke to the Director General. I said, Prime Minister wants to know how long will you take? He said, let me send my teams to do a survey and I shall inform you and then you can tell Prime Minister. And as God is my witness, 19 hours later, the Austrians had said 6 months. 19 hours later, he called me. He said, tell Prime Minister, the road is open. 19 hours later, the road was open. जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते. This is my voice. This is my voice in the CD of Narendra Modi. I went to a Sikkimese mother's house. We lost 22 of our sons who were working round the clock. I went to this woman's house and I said, Behan, I'm sorry I've come at a bad time. Your 24-year-old child has died for India. I gave her a check. The government will give you money. Army will give you border roads. You won't want for money. Anything else I can do. She said, you're a special advisor. Get my younger son a job. I said, the moment I go back, I'll talk to Birla, Tata, Adani, Ambani, Papani, Jitne hain, Singhania. Okay, 2011, no problem, I'll get it. You know what she tells me? She said, Bhai sahab, maine aapko private sector ke liye kab bola hai? Chote bacche ko border roads mein naukri dilwao, waqt aane par wo bhi shaheed ho jaye Bharat ke liye. As the water rushed into my eyes, ma'am, it still does. I held her hands in mine and I said to her, it's imprinted in my memory. I said, Ma, tujhe salam. Agar mera janam mein hota hai, teri jaisi maa ki kook se ho, I will be truly blessed. Mujhe qurban kar dena is desh ke liye. And then I understood why we are Indians. Sir, Mr. Chairman, we are not Indians because we live in India. We are Indians because India lives in us. We call her mother. आप तो माँ हैं. जब संतान बीमार होती है, माँ तो भगवान से भी पंगा ले लेती है. सही कह रहा हूँ? माँ भगवान से भिड़ जाती है. तो हमारी माँ भारत गई, जब उसकी संतान को तकलीफ थी, लेबनान में, सीरिया में, साउथ सुडान में, लीबिया में, यूक्रेन में पिछले साल और इस साल अभी सूडान में मां जाती है, अपने बच्चों को वापस लाती है. ये भारत की ताकत है. And this is for the children, all of you kids. For too long have others written our destiny. Now we will write it ourselves so that nobody else can write it. Who will write India's destiny? I didn't hear the children. अरे क्या भोजन नहीं खाया? Who will write it? You will write India's destiny so that nobody else can write it. Next one, sir. As an Indian, have faith and confidence, beta. Don't get into cynicism. Cynicism does not empower you. वो आपकी ताकत चूस लेता है. You feel helpless and hopeless. How will you change the world? Somebody asked the Gujarati fakir. The fakir said, अपने आप से शुरू करो. उस फकीर का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. Begin with yourself. Change yourself. भाई नई चीज कोई करते हैं ना, आप सब नया बिजनेस करते हैं, बच्चे नई पढ़ाई करते हैं, नई क्लास में जाते हैं, कुछ भी नई चीज करो, थोड़ा सा तो डर लगता है, लेकिन हम फिर भी करते हैं. हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि डर के आगे I heard that. डर के आगे जीत है. लिसोथो के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार पूछा मुझसे, एम्बेसडर दीपक, are you God? I said, sir, I'm not God, but I'm an Indian. That's the next best thing. We are chafing, churning, changing. We are 76 years young. How am I confident that India can play its role in the world? Because we have children like you. गाना सुना आपने? हर घर में है एक लोहे का बंदा. दुश्मन को बददुम मिटा देंगे उसको.
अगर इस लोहे से टक्कर ली उसने। Beta, this is my tombstone in Kargil. It's an area that I love and I'll share with you. Apart from the mountains, there's a particular reason. मैंने अपने हाथों से एक छोटा सा पत्थर है, भगवान बुद्ध के चरणों में है. There's a huge statue in Kargil of the Lord. उस पे लिखा हुआ है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं. Mr. Chairman, I'm sorry, my eye get water. We lost a child in Kargil, sir. He was 22, adopted son. I loved him a lot. He died for India. We didn't want the war. It came. Many years later, his commanding officer came to see me. He said, Ambassador, I want to say something. That kid called me Dad. If he were alive, he would be 45 years today. He left us being 22. Took 18 bullets in his chest. His commanding officer said to me, Captain ने एक संदेश दिया है आपके लिए. Dad से कहना, मैंने अपना फर्ज निभाया. Now the developing countries all tell us, हमने इंडिया को चुना है as our partner, और हम कहते हैं यही है right choice baby. श्री औरोबिंदो ने 115 साल पहले कहा था कि भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत पूरी दुनिया के लिए जीता है. India sheds its light on whole world and India is awakening. और आप लोग जो सो रहे थे ना 40 मिनट से, अब आप भी जाग जाइए क्योंकि भारत भी जाग रहा है. I believe that God is an Indian. This is the best time to be alive in India, but to be young is heaven. इसीलिए सर वो मैं गीत गाता हूँ, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन. I want to be born again. I want to be born in India again. I'm still very young, 72, but I'd like to be even younger. And do you know what we are saying in India? We are saying full volume, please. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. 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 Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Once more, please. Mr. Chairman, when my time comes, if God asks me, what do you want? I'll ask for three things. May I be born in India again. May I become an ambassador of India again. Hello. And this time, be quiet. And this time, please let me study in the Vikash group of institutions. Thank you so much. Thank you. अरे एक बार फिर ताली बजा दो, अच्छा लगता है. No words to express our gratitude for such a magnificent and wonderful words that we heard
And simply it was to conclude, nothing else. Mera Bharat! Mera Bharat! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Vande! 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 Thank you so much, sir, for this patriotic environment of this campus. I'll take my gift before you steal them. So, really, definitely, Dr. Deepak VOHRA is live in Bargarh and live in Vikash. Somebody said me, I just remember the other day when I was inviting, when some of the intellectuals of Bargarh said me, are you sure, sir? Is it right? It is surprising. What Dr. is? Deepak VOHRA is in Bargarh. That was the thing, that was the word. And I have told students to you in the classrooms, don't miss this opportunity. You won't get First topic. another person who loves the country, who dies for the country, who grows with the country. His culture is country. Culture is India. And solely who takes everything in him as the ownership of India. Never he said, it is X, Y, Z. He said throughout his speech, my, and my country. Never he said, others. And whenever he spoke, it is so honest. That is what Dr. Deepak VOHRA. So definitely, it's a wonderful day, wonderful evening, wonderful time. Vikash Foundation Day 2023, 29th April, it has become a history and a memorable time for all the times. It's a wonderful thing. It happened after 21 years of Vikash. That is what. Happy birthday, Mr. Chairman. Happy birthday. Hey, will you join me? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One of the finest sons of India, one of the finest human beings on our planet. भगवान ने अपने हाथों से इनको बनाया, मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाया था. Thank you, sir, so much. Thank you. And now, dear audience, we will have a wonderful patriotic dance dedicated to India, Mother India, and Dr. VOHRA as well. Please be having patience, all. Please have patience, and I must solely ensuring all of you, you will not be disappointed for a moment also. Please be seated.
चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा करके फना करता हूँ मैं हवन। Sing along, come on! चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा करके फना करता हूँ मैं। बहक रहा सर किनारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः देवा देवा, देवा देवा नमः, नमः नमः। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये सुर मेरा तुम्हारा, दो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर सागर में मिले। सुर मेरा तुम्हारा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। बीता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, यूं आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे। यूं आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। जहाँ की रीत सदा है प्रिय जहाँ
समाहेट पवन बासोचे समंतोरी एया में बरगड़िया फुटला फूला रे बोला जय सूर्य कहारे एया में बरगड़िया फुटला फूलोरे बोला जय सूर्य कहारे चल 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 खलमा घो बोली के सामने चल 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 कलमा गो गोराने हम बोल के संगे लुकानी छिरलाई सामने गजरानी कोई काची खेलना भरी मेरे पानी अब भरिया की सही पिरकिनी चप्पा सर्वे कुछ मारा जानी ए अमर पत्रिया बत्रिया नानी ए गजल माँ की सूजी है लगानी ए अमर साजा सिंगा की दिलों में भी जीवन अमर मन जहानी ए अमर बरगड़िया फुटला फुटला फुलोरे बोला तबे रे मोहानी ए में बरगड़िया फुटला फुलोरे बोला तबे रे मोहानी মনের ভাবনা আমার গুটে মাটি সাবন আমার গুটে মাটি লাগি গরম और सुखेते वरनाय करू कहाके आमे प्रेम जीवन से सते जोरम लेके मती আমার साथे আমার রঙে রঙে সো এই পবন চুকা আমি চলবল জলমতি সো কাজি বাজি বনিয়া কেন পাইব আমলে কেরে খুশি মিলন সব সাঙ্গে রে কেতে সুন্দর আমার দুনিয়া দুনিয়া আমি সবার ভারিয়া আমি সবার ভারিয়া আমি
देश का यारों, इस देश का यारों का कहना ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, आजा आजा हिंदुस्तानियों के तले, आजा जरी वाले नीले आसमानों के तले। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह देश दुनिया को कैसे दिखा सकता है? इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम, भारत के नेतृत्व का धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। गाँव गाँव शहर शहर चली रे बढ़ी रे हिंगल है, गाँव गाँव शहर शहर चली रे बढ़ी रे हिंगल है, गाँव गाँव शहर शहर चली रे बढ़ी रे हिंगल है, गाँव गाँव शहर शहर चली रे बढ़ी रे हिंगल है। बूंदे अनेक है सागर है, किरणें अनेक है सूरज है, धड़कन अनेक है दिल है, बोली अनेक है मकसद है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। कहां से चल के आ गए हम कहां, बदले हैं मंजर, बदली है दुनिया। कहां से चल के आ गए हम कहां, बदले हैं मंजर, बदली है दुनिया। आसमां से भी आगे जो है जहां, जाना है हमको तो वहां। हो रहा है अपना तो डिजिटल इंडिया, हो रहा है अपना तो डिजिटल इंडिया। ऑनलाइन दुनिया का है अलग सा ही नशा, लाइफ में स्टाइल लाया सोशल मीडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हो रहा है अपना वो डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हो रहा है अपना वो डिजिटल इंडिया। नए इंडिया का नया ये गाना, दोस्तों मेरे इसे जम के बजाना। नए इंडिया का नया ये गाना, दोस्तों मेरे इसे जम के बजाना। अब फट है हमें आगे बढ़ जाना, क्योंकि अब है डिजिटल पेमेंट का जमाना। अब झट से होते काम, झटझटों से है आराम, देखो कितना है आसान, सेफ भी है मेरी जान। तो जगत
जन्म जी लिया। India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future for its G20 presidency. अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, सुस्वागतम् सुस्वागतम्। विश्व में शांति लाएंगे, हर मुश्किल को हराएंगे। विश्व में शांति लाएंगे, हर मुश्किल को हराएंगे। अब होगा विश्व खुशहाल, होगा विश्व खुशहाल, हमारा होगा विश्व खुशहाल। सरहद सीमा ना रही कोई, हर राष्ट्र हुआ एक सूत्र में। सब मिलकर जश्न मनाएंगे, हर देश को स्वस्थ बनाएंगे। अर्थव्यवस्था भी सुधरे, स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधरे। अमन शांति और भाईचारा, ऐसा है संदेश हमारा। अब होगा विश्व खुशहाल, होगा विश्व खुशहाल,